Hello learners, after covering alkanes and alkenes, now in this part we are going to start with alkynes. Like alkenes, they are also unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2n-2. The simplest alkyne is ethyne having formula C2H2. Now, first of all, we are going to discuss about its structure. Now here, as the structure is indicated here, that each carbon is bonded with two sigma bonds, one on this side, one on this side, and the rest two are the pi bonds. So each carbon is sp hybridized, क्योंकि जितनी hybridization होती है उतने ही central atom sigma bond बनाता है. Now here each carbon is forming in this molecule. Each carbon is forming two sigma bonds. Hence, the multiple bonded carbon is sp hybridized. If we talk about propyne, in this case, this carbon is forming two sigma bonds. It is sp hybridized. This is forming two sigma bonds. It is sp hybridized. But here it is forming four sigma bonds. So it is sp3 hybridized. मतलब multiple bonded carbon atoms में alkynes में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp. Coming to nomenclature, taking again the example of the simplest alkyne, that is ethyne. Two carbon atoms, hence it is eth. Triple bond is showing that the suffix will be -ine in this case. Alkynes में हम suffix क्या use करेंगे? -ine. For two carbon atoms, eth is there. Single carbon atom वाला alkyne is not possible because for the formation of alkynes, at least one triple bond should be there between the two carbon atoms. और अगर carbon single होगा तो उसमें triple bond नहीं बन सकता. In the same way, taking the example of the next alkyne, its name is propyne. If triple bond is on two positions, then its name will be but 1,3-diene. हम दोनों की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे. एंड इफ इट इज ऑन टू पोजीशन देन इट इज ट्राईआइन. अगर तीन पोजीशंस पे होगा तो ट्राईआइन. अगर किसी मॉलिक्यूल में एक जगह डबल बॉन्ड हो और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, then we have done this in the rules for naming the compound, that the numbering will start from the side where double bond is there, means double bond will get the preference. तो उसमें double bond को preference मिलेगी, क्योंकि अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी इसे 1 और 3 पोजीशन मिलती है, और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी मल्टीपल बॉन्ड्स को 1 और 3 पोजीशन मिलती है. मींस अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस पर बॉन्ड होंगे तो हम काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा. हेंस इट्स नेम विल बी but 1,3-ine. बट इफ इट इज द केस, अगर इसमें क्या चेंज हो जाए, अगर एक तरफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो जाए, suppose on this side the number of carbon atoms will be more. In this case, lowest set of locate के according counting will be started from this side. फिर हम इसे preference नहीं देंगे, फिर हम lowest set of locates को preference देते हुए 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Accordingly, it will be given 3 number, but the name will be in the alphabetical order only again. Hex 3-in-1-ine. Hex 3-in-1-ine will be the name. उस वक्त हम इसे प्रेफरेंस ना देकर इसे देंगे, क्योंकि हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स के रूल को फॉलो करेंगे. सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन्स. कमिंग टू आइसोमराइजेशन. Isomers, again the molecular formula is the same but structure is the different. Like 1, 2, 3, 4, 5. It is pent 1-ine or pentyne.
We can draw it in this way also. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms they are there. But now the triple bond is on second position. So now its name will be pent-2-ine. Or we can also draw it in this way. 1, 2, 3, 4. और फिफ्थ कार्बन को हम यहाँ लगा दें. नाउ इट्स नेम विल बी 1, 2, 3, 4. Why we have started the counting from this side? क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट को नंबर चाहे ज्यादा मिल जाए, बट दिस शुड बी गिवन लीस्ट नंबर. सो काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड. सो इट इज 3 methyl butene. 3 methyl butene. Now we have written pentyne, pent-2-ine and 3 methyl butene. अब इनमें क्या सिमिलैरिटी है? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम इन ऑल. The similarity is that molecular formula is the same in every case, but the difference is here the triple bond is on first position, here the triple bond is on second position. So means these two shows the example of position isomerism. They show the difference in the position of multiple bond, hence it is position isomerism. If we come to this, इसको और इसको compare करें, तो ट्रिपल बॉन्ड इज ऑन वन पोजीशन ओनली, बट नाउ हियर इज द डिफरेंस इन द चेन. सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म. इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द चेन. मींस दीज एग्जांपल आर शोइंग अस द टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म. लेकिन इसके अलावा ये एक और तरह का आइसोमेरिज्म भी शो करता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. हाउ इज इट? सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ Suppose if we take the example but1-ine. अगर हम एग्जाम्पल लें but1-ine का. Now here 1, 2, 3, 4 carbon atoms they are there, 3, 4, 5 and 1, 6 hydrogens they are there. लेकिन अगर हम इसी को डाई-ine में कन्वर्ट कर दें, if we write it in this way, now here 4 carbon atoms they are there, hydrogen 2, 3, 4, 5 and 6, C4H6. Molecular formula is the same, but here it is triple bond, but here it is double bond. Its name is butene and its name is but1,3-diene. So in this way it is showing functional group isomerism, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, hence it also shows functional group isomerism. So this is just the introduction, structure, nomenclature and isomerism we have discussed regarding alkynes. sp hybridization is shown by multiple bonded, triple bonded carbon atoms. Nomenclature, different rules we have discussed, and regarding isomerism, alkynes show position, chain and functional group isomerism. Thank you.